Good morning friends, this is Veer Singh Rajput from Saraswati classes, Narol, Ahmedabad. Students, this is our first lecture of standard 11 and we are going to take the first chapter of accountancy. The name of that chapter is accounting and its terminology. Now what do you mean by this accounting and terminology? Before understand this one, first of all we should have to understand one thing, that accounting is not a new concept in India or in the world. It is a concept which is to be used from a very ancient times. Even Raja Ram was using this method in the previous time, which is to be said in Satyug, right? But no definition was given in scientific manners. That's why it is not to be used at that time as a word accounting. But later on, as we know that Luca Pacioli, the first person who have developed this thing in 1492, that what is accounting. So first of all we should know what is the meaning of accounting. Firstly, we will understand this accounting in a simple manner. So in a simple words, it can be said that accounting is known as a term of bookkeepings. Now what do you mean by bookkeepings? Now bookkeepings का मतलब ये होता है that in a particular firm there are a lots of transactions during a day. If those transactions are not to be recorded in a proper way, so the owner of that particular firm will not be able to understand whether the company is getting profit or loss. To get the actual condition of the business, to detect the frauds of the business, to find out whether the process is going on in a systematic way or not, accounting is very much needed nowadays, right? So there are various kind of definitions given by the various accountants, but a specified definitions which is given by American Institute of Accounting, that is, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. accounting एक ऐसी वस्तु है जिसे एक ऐसी कला है जिसे रिकॉर्ड करना, जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, क्लासीफाई इन द सेंस अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कुछ ट्रांजैक्शंस आपके कैश होंगे, कुछ क्रेडिट होंगे, राइट? तो उन दोनों ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और एक अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से उसे व्यवस्थित ढंग से लिखना, रखना, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट इन टर्म्स ऑफ मनी? एज we should understand, this is the concept of accounting, that no transaction should be without money. Means what? In accounting we only use those transactions which have economic value. The transactions which have not any economic value, those transactions will not to be added in the accounts. So this is the meaning. In terms of money, मतलब जिनका पैसे में हम मूल्यांकन कर सकते हो, ऐसे ट्रांजैक्शंस को ही हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग में ध्यान में लेते हैं. ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर. ठीक है, तो चाहे कोई ट्रांजैक्शंस हो, चाहे कोई इवेंट हो, वट एवर हैपन इन द बिजनेस, दैट शुड बी इकोनॉमिक. अगर वो इकोनॉमिक है, देन and interpreting the results thereof, और जो भी
रिजल्ट्स आते हैं उसका अर्थघटन करना, यह एक तरह का अकाउंट का क्या आता है, वर्क होता है, दैट इज टू बी डन इन अकाउंटिंग. So moreover friends, we have discussed the definitions of accounting. The first one in a simple words, that accounting means to record the transactions, or to accounting refers to bookkeeping. But in second method, it is described in a scientific way that it is not only a bookkeeping, it is a art of recording, classifying, summarizing in a significant manner, and in terms of money, transactions and events which are in a part of at least a financial character. कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जब तक उसका कोई फिनेंशियल करेक्टर नहीं होगा उसे हम अकाउंट की लैंग्वेज में इनपुट नहीं कर सकते. अकाउंटिंग में उसका कोई स्थान नहीं है जब तक उसका कोई मूल्य नहीं है. ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग अकाउंटिंग. ठीक है, नाउ विल कम विद नेक्स्ट वीडियो विच इज रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. We will come later.